amplification by stimulated emission of radiation. So properties of laser, we know that the laser is the monochromatic source of light, means it consists of the light emitted by laser have this single wavelength. Then we know we also studied that is the laser is the highly coherent source of light, means those emitted by laser are in same phase. Yes, sir. Then we also studied that is the intensity of laser is very high because all the energy laser can travel through the narrow beam, and so all the energy is concentrated over the small area. So that's why the intensity of laser is very high. We also studied about the laser is the unidirectional source or highly directional source of light. So laser beam travels the long distance in the we can say that the as a narrow beam एक लाइन के अंदर ट्रेवल करता है its divergence is very less उसका डाइवर्जेंस जो रहता है स्प्रेडिंग जो रहता है कम रहता है then we also studied about the terms related with the lasing action. So before that we studied about that is what is the excited state of atom. So when the atom absorb the external energy, then the energy of atom get increased and it is called as the atom is in its excited state. Then we also studied about the lifetime of atom. So when the atom goes to the excited state, then it spend very little time in the excited state, and after completion of that time, it comes to the ground state, its own. And this time for which the atoms stay in the excited state, it is called as the lifetime of atom. It is approximately 10 raised to minus 8 seconds for the normal state, normal excited state. There are some special types of excited state called as the metastable state. In metastable state, the atom spend somewhat more time than its lifetime in the normal excited state. So the time spent by atom in the metastable state is 10 raised to minus 3 seconds. Population inversions. To start the lasing actions, the number of atoms in the higher energy state should be more. So that's why when they make the transition, we get the light. So to have the more number of atoms in the excited state than the lower state, it is called as the population inversion. Population inversion can be achieved by using the different methods. So one of the method is the optical pumping. So by passing the photon through the medium, we can raise the atom from the ground state to the excited state. And this pumping of atom from ground state to excited state, it is called as the, with the help of light, it is called as the optical pumping. Then we also studied about the active system. What is the active system? So the active system is nothing but the system in which or the medium in which the population inversion is takes place. That is the active system. Then we studied about the spontaneous emission. So suppose the atoms are in their excited state, and after completion of their lifetime, if they comes to the ground state, and during this transition from excited state to ground state, the atom emits the photon. Such a emission of photon is called as the spontaneous emission. And in spontaneous emission, we get the ordinary light. Ordinary light मिलता है. Then we studied about the stimulated emission. So when the atoms are in its metastable state, where the lifetime of atom is somewhat more than the lifetime in the normal excited state. So that's why the density of atoms in the metastable state increases. And before completing their lifetime, if it passes the external photon through this medium, then that external photon stimulate the atoms in excited state to make the transition from excited state to ground state. During these transitions, the photon is emitted. This emitted photon and the incident photon means external photon are in same phase. They move in the same directions. They have the same wavelength. So that's why in stimulated emission, light emitted is the
लेजर बिकॉज इट satisfy it the properties of लेजर लेजर की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं, तो स्टिमुलेटेड एमिशंस के अंदर आपको लेजर मिलता है. Then we also studied about the different parts of the laser. एक general laser लिया तो what are the minimum parts required for the laser? So first one is the active medium. So the medium in which the lasing action is takes place, it may be gaseous type or it may be liquid type or it may be solid type. इस टाइप का एक्टिव मीडियम होगा जिसके अंदर लेजिंग एक्शन होगा. There should be a excitation mechanism. Excitation mechanism means to raise the atoms from the ground state to excited state. So there is the excitation mechanism. There are two mirrors. Out of these two mirrors, one is totally reflecting, 100% reflecting mirror, and the another one is the partially reflecting mirror. These are the essential parts of the laser. Lasers के अंदर इतने सब parts रहते हैं. एक जनरल लेजर लिया तो. Then we studied about how the optical resonator works. So जो mirrors है दोनों side में, वो दोनों का arrangement जो रहता है, that is called as the optical resonator. The optical resonator is used to amplify the light. Light का amplifications करने के लिए we use the optical resonator. How the amplification is takes place, last lecture में बताया था मैंने कि सपोज एक एक्सटर्नल फोटोन पास किया तो उसकी वजह से और एक फोटोन मिलेगा, मींस विल गेट टू फोटॉन्स. ये दोनों फोटॉन्स रिफ्लेक्ट हो गए मिरर से एंड दे पासेस थ्रू दिस मीडियम अगेन. सो दैट्स व्हाई वी गेट दी 2 + 2 4 फोटॉन्स. ये 4 फोटॉन्स ऐसे रिफ्लेक्ट होते हैं. And when the 4 photon passes through this medium, they make the stimulated emission of another 4 photons. And so that's why we get the 8 photons. 8 photons ऐसे reflect होके फिर से 16 photons मिलेंगे. 16 photons reflect होके we'll get the 32 photons. And in this way, amplification of photons takes place. So with the help of optical resonator, the amplification of light is takes place. So we have completed all this in the last lecture. Now today we are going to study about the different types of laser. So what are the different types of laser we are going to study in this lecture? So in this lecture we are going to study about the types of laser. There are 4 types of laser. Out of these 4 types of laser, we have to study only the 2 types of laser. That is the gas and semiconductor laser. In gaseous laser, again there are the number of types, but we have to study only the carbon dioxide laser. In semiconductor laser also there are number of types. Here we are going to study the heterojunction laser, and then we'll summarize all the topics covered in today's lecture. So the types of laser, there are basically 4 types of laser: solid state laser, gaseous type laser, liquid laser, or it is also the dye laser, and the semiconductor laser. ये जो टाइप्स है बेसिकली मेन टाइप्स ऑफ द लेजर्स आर द 4. 4 टाइप्स के अंदर डिवाइड होता है लेजर. सो सॉलिड स्टेट लेजर लिया तो देयर आर नंबर ऑफ सॉलिड स्टेट लेजर, एक ही लेजर नहीं रहेगा. गैसियस टाइप लेजर लिया तो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ लेजर. बट हियर एज पर आवर सिलेबस वी हैव टू स्टडी ओनली द कार्बन डाइऑक्साइड लेजर. इसका मतलब गैसियस टाइप यानी एक ही लेजर रहता है ऐसा नहीं है. देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ लेजर. लिक्विड लेजर में भी बहुत सारे टाइप्स रहते हैं, बट दैट इज नॉट एज पर आवर सिलेबस में दिया नहीं है. तो we have to study only the gaseous type laser and the semiconductor laser. So carbon dioxide laser, we are going to study the gaseous type laser, and which we are today we are going to study the carbon dioxide laser. So first we'll see the construction of the carbon dioxide laser. Carbon dioxide laser के अंदर construction किस टाइप से रहता है. So the diagram से भी आप रेफर करोगे, you will find there is the ये एक ट्यूब दिया है यहाँ पे. This is the we can see that the active system बोलेंगे हम इसको ट्यूब को. So जिस मटेरियल के अंदर लेजिंग एक्शन होने वाली है ना, गैसेस CO2 लेजर है ना, गैसेस टाइप लेजर, कार्बन डाइऑक्साइड लेजर. तो ये जो ट्यूब रहती है इसके अंदर लेजिंग एक्शन होने वाली. दिस ट्यूब इज कॉल्ड एज द डिस्चार्ज ट्यूब. ये जो बीच में ट्यूब है ना, वो वाली ट्यूब, दिस ट्यूब इज कॉल्ड एज द डिस्चार्ज ट्यूब. ये डिस्चार्ज ट्यूब है.
At the ends of this tube are closed with the mirrors. This is the fully reflecting mirror, and this is the partially reflecting mirror. The arrangement of this mirror forms the optical resonator. Optical resonator बनता है. And दिस इज एक आउटर जैकेट लिया है ट्यूब के आजू बाजू एक जैकेट बना है. दिस जैकेट इज फॉर दी वर्क एज ए कूलेंट. कूलेंट का काम करेगा. उसमें से लिक्विड नाइट्रोजन पास करते हैं, उसकी वजह से कूलिंग होता है, ट्यूब का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, उसको कूल करता है ये वाला जो जैकेट है. Then there are then we'll say, and there are two electrodes. दो इलेक्ट्रोड्स लिए, पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स लिए डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, दोनों एंड के ऊपर. So what are the discharge tube? So it consists of the discharge tube. What are the dimensions of discharge tube? So the cross sectional area of discharge tube is 1.5 mm square. 1.5 mm square यानी सेंटीमीटर में लिया तो 0.15 सेंटीमीटर स्क्वायर. 0.5 सेंटीमीटर एक साइड आएगी उसके. 0.15 0.0015 आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर. एंड लेंथ ऑफ दिस ट्यूब, ये जो डिस्चार्ज ट्यूब, इसका लेंथ कितना रहता है? अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 25-26 सेंटीमीटर. लेंथ बहुत ज्यादा है, बट इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया मींस इट्स डायमीटर इज वेरी लेस. इसका डायमीटर बहुत कम है, ट्यूब का डायमीटर बहुत कम है. दिस ट्यूब इज फिल अप विद द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस. सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं यूज करेंगे हम, अलग अलग गैसेस का मिक्सचर इस तरह फिल अप करेंगे. कौन कौन सी गैसेस का मिक्सचर लेते हैं हम? So carbon dioxide, then nitrogen and helium. This tube consists of the mixture of carbon dioxide, nitrogen and helium gas. What is the proportion of these gases? The proportion of these gases is the 1:2, 2:3. यानी कार्बन डाइऑक्साइड सबसे कम, उससे ज्यादा नाइट्रोजन, और बाद में सबसे ज्यादा कौन सा? हेलियम गैस. So this is the proportion of the mixture of gases filled in the tube, discharge tube. One end of tube is closed with the partially silver mirror, and remaining end is closed with the Brewster window, or we can say that they are fully reflecting mirror. A completely silver mirror is kept behind the Brewsters. ये यहाँ पे window रहती है. What is the use of this window बाद में बताता हूँ. And at the end of Brewster window के बाद में fully reflecting mirror रहता है. The tube has two electrodes connected to the power supply as shown in the. ये दोनों इलेक्ट्रोड जो होते हैं उसके अक्रॉस में बहुत हाई वोल्टेज पावर सप्लाई कनेक्ट करते हैं. हाई वोल्टेज पावर सप्लाई is connected across these two electrodes. In this laser, CO2 molecules are active centers. What is meant by active centers? जिसकी वजह से लेजिंग एक्शन होता है. फॉर एग्जाम्पल, here in carbon dioxide laser, the lasing action is takes place when the carbon dioxide molecule jump from the excited state to ground state. कार्बन डाइऑक्साइड मोलेक्यूल का जो ट्रांजिशन होता है हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट, सो लेजिंग एक्शन होता है. वी गेट द फोटोन. फोटोन एमिट होता है. सो बिकॉज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड मोलेक्यूल वी गेट द लेजर, we get the photons. The photons get emitted during transition of carbon dioxide molecule. So that's why here the lasing action takes place because of the carbon dioxide molecules. So that's why the carbon dioxide molecules are called as the active centers. जिसकी वजह से लाइट मिल रहा है उसको बोलते हैं एक्टिव सेंटर्स. So in this laser, the lasing action is takes place because of the carbon dioxide molecule. So that's why carbon dioxide molecules are called as the active centers. So इसके ऊपर एमसीक्यूज में प्रोपोर्शन या गैसेस के मिक्सचर या डायमेंशंस या तो व्हाट आर द एक्टिव सेंटर्स इन द कार्बन डाइऑक्साइड लेजर, तो आपको आना चाहिए. Do you have any problem regarding the construction of carbon dioxide laser? No, sir. No, sir. So the next part, how the carbon dioxide laser works. किस टाइप से वर्किंग होता है कार्बन डाइऑक्साइड लेजर का. So by using the energy level diagram, we can explain the working of carbon dioxide laser. एनर्जी लेवल डायग्राम यूज करके हम एक्सप्लेन कर सकते हैं वर्किंग कार्बन डाइऑक्साइड लेजर किस टाइप से वर्क करता है. So see this diagram. Okay, before that diagram, we know that there are two electrodes at the end of discharge tube.
दोनों डिस्चार्ज ट्यूब यानी गैसेस के दो इलेक्ट्रोड छोड़े at both the ends of the tube, दोनों ट्यूब्स के, और हाई वोल्टेज इज कनेक्टेड अक्रॉस दिस डिस्चार्ज ट्यूब. So when we switch on the supply, when we connect the high voltage, जब हम high voltage supply जो होता है उसको switch on करते हैं, so then what happened? So the we can say that the electrical discharge is produced in the gases uh, present in the discharge tube. Electrical discharge होता है. What is meant by the electrical discharge? So electrical discharge means we get the free electrons. Free electrons are generated in the tubes. किस टाइप से free electron generate होते हैं ट्यूब में? So the supply connected across the electrode is very high. मेरे हिसाब से थाउजेंड्स ऑफ होल्ड्स के अंदर है ना, किलो होल्ड्स के अंदर सप्लाई कनेक्ट करते हैं वहां पे. इलेक्ट्रोड्स के अक्रॉस कितना हम घर के अंदर 250 240 वोल्ट्स यूज करते हैं, वहां पे हाई वोल्टेज सप्लाई कनेक्ट करते हैं, यानी किलो वोल्ट्स के अंदर सप्लाई रहता है. बिकॉज ऑफ दिस हाई वोल्टेज, ये हाई वोल्टेज की वजह से क्या होता है कि द इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं एटम में मोलिक्यूल के, उसके ऊपर फोर्स एक्ट होता है. द इलेक्ट्रॉन कैरीज नेगेटिव चार्ज, और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जो होता है वो कैसा रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा, और हाई वोल्टेज की वजह से बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज रहेगा इलेक्ट्रोड के ऊपर, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के ऊपर. So the positive electrode attract the electrons in the last orbit of the atom. Last orbit में जो electrons थे उसको ज्यादा force of attraction उसके ऊपर apply करेगा. And because of force of attraction, the electron in the last orbit of atom get detached. वो atom से बाहर आ जाएगा because of the large force of attraction. ज्यादा वोल्टेज लगाने की वजह से क्या होगा, लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन था वो ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, डिटैच होगा एटम से. एटम से जब इलेक्ट्रॉन डिटैच होगा तो क्या बोलते हैं हम उसको, फ्री इलेक्ट्रॉन्स. सो दिस इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज. So because of the high voltage, electrical discharge of the gases in the gases is takes place. Means the free electrons are generated. Free electrons generated होते हैं. The N2 molecule, हाँ. Now these free electrons, ये free electrons के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है. So this free electron moves towards the, attracted towards the positive electrodes. Positive electrodes की तरफ attract हो गए. So these free electron moves with very high velocity because the force of attraction very large. The high voltage की वजह से force of attraction ज्यादा है, and so that's why these free electrons moves towards the positive electrodes with very high velocity. बहुत ज्यादा वेलोसिटी के साथ वो मूव होते हैं. सो the when these electrons, moving electrons collides with the nitrogen atom, नाइट्रोजन मोलिकुल और एटम्स, मोलिकुल बोलेंगे हम, नाइट्रोजन के दो एटम्स मिला के नाइट्रोजन का मोलिकुल तैयार होता है. So when these free electrons during their motion collides with the nitrogen molecules, so these moving electrons have the kinetic energy. Electrons को कौन सा एनर्जी रहता है, kinetic energy रहता है, because they move. So these moving electrons collides with the nitrogen molecule, and during their collision they transfer their kinetic energy to the nitrogen atom. नाइट्रोजन एटम को उनका काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर करेंगे. So after absorption of kinetic energy from the electron, the energy of nitrogen molecule get increased. नाइट्रोजन के मोलिकुल का एनर्जी इंक्रीज होगा. So we can say that the excitation of nitrogen molecule takes place. We know that when the energy of molecule or atom increases, then we Yes. can, hello. So when the energy of the nitrogen molecule increases, they goes to the excited state. यानी वो कहीं पे जाते नहीं, वहीं पे रहते, उसका एनर्जी इंक्रीज होने के बाद हम क्या बोलते हैं, the nitrogen molecule is in its excited state. नाइट्रोजन मोलिकुल कैसा है, एक्साइटेड स्टेट में. So here refer the diagram. In this diagram, ये जो नाइट्रोजन मोलिकुल था, नाइट्रोजन मोलिकुल, ये ग्राउंड स्टेट है नाइट्रोजन मोलिकुल का, और ये एक्साइटेड स्टेट है नाइट्रोजन मोलिकुल का. तो नाइट्रोजन मोलिकुल goes to the excited state. In this way, the excitation of nitrogen molecule takes place. Excitation होता है, it goes into the excitation state, excited state. किस टाइप से एक्साइटेशन हुआ, तो उसने
इलेक्ट्रॉन का एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एब्जॉर्ब किया, उसका एनर्जी इंक्रीज हो गया, एनर्जी इंक्रीज हुआ है ना, हम बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट में. So in this way, excitation of nitrogen molecules takes place. Now, when is nitrogen molecules collides with the मोलिकुल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के मोलिकुल के साथ जब नाइट्रोजन के मोलिकुल का कोलिजन होगा, so the nitrogen molecule transfer their energy to the carbon dioxide molecule. During the collision with the carbon dioxide molecule, nitrogen molecule transfer their energy to the carbon dioxide molecule. कार्बन डाइऑक्साइड के मोलिकुल को एनर्जी ट्रांसफर करेगा. ट्रांसफर करने के बाद क्या होगा, नाइट्रोजन का एनर्जी कम हो जाएगा. सो नाइट्रोजन मोलिकुल कम्स टू द ग्राउंड स्टेट. That is called as the de-excitation of nitrogen molecule takes place. नाइट्रोजन के मोलिकुल का de-excitation हो गया, उसका जितना भी एनर्जी था, ज्यादा का एनर्जी that is given to the carbon dioxide molecule. देखो यहाँ पे एनर्जी है कार्बन डाइऑक्साइड मोलिकुल. In this way, अभी कौन से मोलिकुल का एनर्जी इंक्रीज हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड का जिस मोलिकुल का या एटम का एनर्जी इंक्रीज होता है उसको क्या बोलते हैं हम, एक्साइटेड में पहुंच गया. So in this way, carbon excitation of carbon dioxide molecules are takes place. इस टाइप से कार्बन डाइऑक्साइड के मोलिकुल का एक्साइटेशन होता है. So कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर देर आर 5 एनर्जी स्टेट्स. द फर्स्ट ग्राउंड स्टेट जो रहती है उसको क्या बोलेंगे हम, E1. दिस फर्स्ट first excited state is denoted by E2. This is E2. This is E3. This is E4 and this is E5. They are 5 energy states. Excited state कितनी रहती है कार्बन में, 5 रहती है. So it goes to the 5th excited energy state. यानी E5 के अंदर उसका ट्रांजिशन हुआ, ट्रांजिशन, और we can say that the pumping हुआ. The pumps to the excited state, pumping हुआ उसका E5 के अंदर. In this way, the excitation of carbon dioxide molecules are takes place. Do you have any problem up to this? सर कार्बन डाइऑक्साइड का फायदा क्या होता है, यानी ये ऐसा कंसिडर करना है या फिर ऐसे ऐसे ही होता है, मतलब कैलकुलेट करके निकाले हैं किसी ने. फिर से रिपीट करो, मुझे बीच में आवाज आ रही थी दूसरे. कार्बन डाइऑक्साइड का एक्साइटेड स्टेट 5 होते हैं. तो जो इलेक्ट्रॉन, जो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल ने जो एनर्जी प्रोवाइड दिया होगा कार्बन डाइऑक्साइड को, तो उसमें कार्बन, एक कार्बन का आइटम है और 2 ऑक्सीजन के आइटम है. तो वो जो एनर्जी है वो किस एटम को गई होंगी, कार्बन के एटम को या ऑक्सीजन के एटम को. देयर आर, फर्स्ट यू शुड अंडरस्टैंड डिफरेंट एनर्जी एक्साइटेड स्टेट डिफरेंट है क्या. फॉर एग्जांपल when the carbon dioxide molecule absorb the energy of one electron volt, it goes to the first excited state. जब 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में जाएगा. 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एब्जॉर्ब करेगा तो थर्ड एक्साइटेड. कितना एनर्जी एब्जॉर्ब कर, कितना एनर्जी इंक्रीज हुआ, अकॉर्डिंग टू दैट देयर आर द डिफरेंट एक्साइटेड स्टेट. नाउ ये यहाँ पे ट्रांसफर करता है एनर्जी नाइट्रोजन का, बिकॉज इसका एनर्जी, नाइट्रोजन का एनर्जी एक्साइटेड स्टेट का और इसका 5th लेवल का एनर्जी सेम रहता है. सो दैट्स व्हाई द एनर्जी ट्रांसफर इज पॉसिबल. ये एनर्जी ट्रांसफर क्यों पॉसिबल है, इसका जो लेवल है, सपोज फॉर एग्जांपल ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इसका लेवल. सो इसका 5th लेवल जो रहता है वो भी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहता है. दे दोनों का जो लेवल है, एक्साइटेड लेवल है, दोनों का एनर्जी जो रहता है वाली एक्साइटेड स्टेट में, वो दैट इज अप्रोक्सीमेटली सेम रहती है. सो दैट्स व्हाई द एनर्जी कैन बी ट्रांसफर. सपोज ओके सर. कोई एटम लेता हूँ, उसका कैपेसिटी जो रहता है एक्साइटेड स्टेट का कम रहता है, यहाँ पर है, तो वो इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर सकता. ये दोनों का मैच होता है. सो दैट्स व्हाई द एनर्जी गेट ट्रांसफर. अदरवाइज देयर इज नो वे द एनर्जी कैन बी ट्रांसफर. दोनों का लेवल सेम रहता है, दोनों का एक्साइटेड लेवल का एनर्जी स्टोर करने का लेवल जो रहता है वो सेम रहता है. सपोज कोई मोलेकुल जो होगा, सपोज उसका एनर्जी सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. सपोज हाईएस्ट एक्साइटेड स्टेट का एनर्जी कितना, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है फॉर एग्जांपल. यस सर. तो क्या होता है कि यदि मैं उसको 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दूंगा तो एक्साइट नहीं होगा, उसमें से इलेक्ट्रॉन डिटैच हो जाएगा, आउटसाइड चला जाएगा. हाँ इलेक्ट्रॉन सर. हो जाएगा, एक्साइटेशन नहीं होगा. बट ये जो
नाइट्रोजन का एक्साइटेड स्टेट था, उसका एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड का एनर्जी, हाईएस्ट एक्साइटेड स्टेट का एनर्जी, वो दोनों सेम रहता है। सो एनर्जी ट्रांसफर इज पॉसिबल। सपोज कार्बन का कम रहता था और इतनी एनर्जी देता तो क्या होता था, एक्साइटेशन नहीं होता था कार्बन मोलिकुल का, क्या होता था, इलेक्ट्रॉन आउटसाइड चला जाता इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाता। था। हाँ, एक्साइटेशन की बजाय डिटैच होता था इलेक्ट्रॉन। बट यहाँ पे दोनों का एनर्जी सेम रहता है, सो दैट्स व्हाई द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज पॉसिबल। ओके सर। नाउ द नेक्स्ट, सो विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल फोटोन, ये जो मीडियम था इसमें से एक्सटर्नल फोटोन पास करेंगे हम, एक्सटर्नल फोटोन। सो विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल फोटोन the stimulated emissions are takes place, stimulation stimulated emissions होती है between the different level, different energy level of carbon dioxide. The number of transitions are takes place between the different energy levels of the carbon dioxide. पांडुरंग विठ्ठल मायबाप विठ्ठल 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 with the uh, with the help of external energy, with the help of external photon पास करते हैं हम। और एक्सटर्नल फोटोन क्या करता है, इट फोर्स द molecules of carbon dioxide in the E5 level to make the transitions in the different levels, अलग अलग levels के अंदर transitions होता है। So what are these different transitions? So the first transition is takes place between E5 and E4. पहला ट्रांजिशन होगा with the help of external photon, that is between E5 and E4. So during this transition, the photon of energy or the radiation of wavelength 10.6 micrometer is emitted. फोटोन एमिट होगा, उसका वेवलेंथ कितना रहेगा, 10.6 माइक्रोमीटर। एंगस्ट्रॉम यूनिट में लिया तो 1,06,000 एंगस्ट्रॉम यूनिट का लाइट मिलेगा आपको यहाँ पे। ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन E5 और E4 में कितना लाइट मिलेगा आपको, 10.6 माइक्रोमीटर और 1,06,000 एंगस्ट्रॉम यूनिट का लाइट मिलेगा। दिस वेवलेंथ बिलोंग्स टू इंफ्रारेड लाइट मिलेगा आपको, इंफ्रारेड रेडिएशन मिलेगा। यस सर। The another transition is takes place between E5 and E3. E5 और E3 के बीच में एक ट्रांजिशन होता है। During this transition, we get the photon or radiation of wavelength 9.6 micrometer, means 96,000 angstrom units. This wavelength also belongs to infrared radiation. Now, once these transitions are takes place, ये transitions हो गई E4 and E5 to E3, ये दो टाइप की ट्रांजिशंस है। दोनों ट्रांजिशंस के अंदर वी हैव गॉट द लाइट, दोनों ट्रांजिशंस के अंदर लाइट मिला आपको। सो नाउ द मोलिकुल्स कम्स टू द E4 के अंदर मोलिकुल जमा हो गए और E3 के अंदर मोलिकुल जमा हो गए। नाउ E4 और E3 में क्या होता है, the molecules from E4 and E3 falls back to E2 के अंदर आएंगे। कैसे आएंगे, by the collision with the unexcited carbon dioxide molecules। कुछ कार्बन, सबके सब molecules excite नहीं हो गए ना E5 के अंदर। so कुछ molecules थे जिनका excitation नहीं हुआ था, unexcited carbon dioxide molecules जो थे उनके साथ उसका collision होता है, and the molecule in E3 and E4 comes back to E2 के अंदर आते हैं। now E2 के अंदर आने के बाद यहाँ पे number of molecules of carbon dioxide are increases, and here the these molecules are collides with the helium molecules। helium के जो molecules थे, helium के जो atoms थे, उसके साथ इसका collisions होता है, and they get de-excited to the ground state, and in this way de-excitation of carbon dioxide molecules takes place। helium के साथ उसका collisions होता है and they comes back to the ground state। the same process is repeated again and again। ground state में आने के बाद फिर से नाइट्रोजन उसका एनर्जी उसको ट्रांसफर करेगा, and they goes to higher energy state, and the same process is repeated again and again, and we get the light in the output system। लेजर मिलेगा आपको, बीम मिलेगा लेजर का, आउटपुट है। in this way carbon dioxide laser is works, इस टाइप से वर्किंग होता है कार्बन डाइऑक्साइड लेजर का। do you have any problem up to this? सर जब कार्बन डाइऑक्साइड जो है हीलियम से मतलब
कोलाइड करेगा तब कुछ एनर्जी इमिट नहीं करेगा? कोलिजन होने के बाद एनर्जी ट्रांसफर होती है, हाँ, ट्रांसफर नहीं करेगा। ट्रांसफर कर देगा ना हेलियम को। ओके। और हीलियम एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाएगा फिर, जो भी अगर? नहीं, helium इतना एनर्जी नहीं ना, ये एनर्जी फोटोन हाँ। इन टर्म्स ऑफ फोटोन। जस्ट 1 मिनट, कौन है बी डिवीजन 264, मैं इसको रिमूव करता हूँ, गेला का तो। सर उसने लीव कर दिया। हाँ, ओके, नो प्रॉब्लम। सो क्या होता है यहाँ पे, फोटोन एमिट करने के बाद इसका एनर्जी ऑलरेडी कम हो चुका है, एनर्जी हाँ बहुत सारा सर। कम हो गया। और यहाँ पे आने के बाद फिर से एनर्जी कम होता है। जब E2 के अंदर आते हैं तो बहुत ही कम एनर्जी देते हैं, तो इट ट्रांसफर वेरी लेस एनर्जी टू हेलियम। और हेलियम का जो ओके। एक्साइटेड स्टेट होगा वो मैच नहीं होता इनके साथ, इसीलिए कॉम्बिनेशन जो लिया वो उस टाइप के पर्टिकुलर गैसेस का कॉम्बिनेशन लिया। यस हीलियम सर। एटम रहता है, हीलियम का मोलिकुल्स की जगह एटम रहता है, इट कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट ऑर्बिट। सो चांसेस जो उसके एक्साइटेशन के कम रहते हैं। सो कॉम्बिनेशन उस टाइप से लिया गैसेस जो एक दूसरे को मैंने सूट करेगा, इस टाइप से कॉम्बिनेशन लिया होता है गैसेस। So what are the advantages of carbon dioxide laser? It is a very सर high power laser. हाई पावर लेजर है ना, ज्यादा पावर का बीम जो रहता है एमिट करता है। अप्रोक्सीमेटली वेवलेंथ भी जो लाइट सर एमिट करती है वो ज्यादा रहती है। हाँ, सर मतलब जब नीचे जो E2 से जो अपना ये है CO2 मॉलिक्यूल जब हीलियम के साथ कंबाइन होगा, कंबाइन मतलब वो एनर्जी ट्रांसफर करेगा तभी लाइट एमिट होगा ना? नहीं नहीं ना रे, मैं लाइट लाइट वेट यहाँ पे हो रहा है, ये ट्रांजिशन के दौरान। व्हेन द ट्रांजिशन फ्रॉम E5 to E4 is takes place, we get the photon. When the light is when the molecule of carbon dioxide transit from E5 to E4, E3, E4 और E3 में जब आता है तब फोटोन एमिट होता है। दिस सी हियर द फोटोन। यहाँ पे ये जो ट्रांजिशंस होते हैं, दिस नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशंस, इसमें कोई रेडिएशंस नहीं मिलता है। दिस इज नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशंस, जिसमें रेडिएशन नहीं मिलता है, उसकी इतनी एनर्जी नहीं कि वो रेडिएशन एमिट करे। यहाँ पे ज्यादा एनर्जी रहती है, रेडिएशन एमिट करने के बाद उसका एनर्जी कम हो जाता है। सो रेडिएशन एमिट करने के बाद उसका एनर्जी इतना नहीं रहता है कि आगे की ट्रांजिशंस के अंदर वो लाइट एमिट कर पाए। और यहाँ पे ट्रांजिशन जो रहा है वो एनर्जी उसकी ट्रांसफर कर दे रहा है, कार्बन अनएक्साइटेड कार्बन मोलिकुल को एनर्जी ट्रांसफर कर दे रहा है। यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर नहीं कर रहा, वो ट्रांजिशन कर रहा है। ट्रांजिशन यहाँ पे भी हो रही है, बट आफ्टर आफ्टर ट्रांसफरिंग इट्स एनर्जी, उसमें एनर्जी ही नहीं है रेडिएशन एमिट करने के लिए, उसके ओके अंदर कोई सर। एनर्जी बचता नहीं है ट्रांजिशन एमिट करने के लिए रेडिएशन। इट इज यूज फॉर द कटिंग एंड ड्रिलिंग मेटल्स। इतना ज्यादा पावर रहता है उसका लेजर का। बजरंग विठल माय बाप विठल दिस टाइप ऑफ लेजर कैन बी यूज फॉर द कटिंग एंड ड्रिलिंग मेटल्स। किस टाइप से होता है कटिंग और ड्रिलिंग, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम। इट्स कंटिन्यूअस वेव मोड लेजर है, यानी इसके अंदर जो लाइट एमिट होता है वो कंटिन्यूअसली एमिट होता है। यानी कुछ लेजर जो रहते हैं ना वो पल्स एमिट करते हैं, एक पल्स एमिट करता है फिर थोड़ी देर से दूसरी पल्स एमिट करता है। दैट टाइप ऑफ लेजर्स आर कॉल्ड एज द पल्सेटिंग लेजर, बट दिस इज द कंटिन्यूअस लेजर, यानी इट एमिट्स द कंटिन्यूअस लाइट एमिट करते हैं। सो दिस इज अबाउट द कार्बन डाइऑक्साइड लेजर। द नेक्स्ट टाइप ऑफ लेजर इज द हेटेरोजंक्शन सेमीकंडक्टर लेजर. So first we'll see about the construction of heterojunction semiconductor laser. So here it is just like the diode because it has the two electrodes. Upper surface से एक इलेक्ट्रोड लिया और लोअर सरफेस से एक इलेक्ट्रोड लिया। सेमीकंडक्टिंग मटेरियल यहाँ पे यूज करते हैं फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस लेजर। सो दिस इज जस्ट लाइक द डायोड। डायोड के अंदर जैसे पी टाइप मटेरियल रहता है, एन टाइप मटेरियल रहता है। एक्चुअली कंस्ट्रक्शन देखो तो ऐसा लगेगा कि दिस इज द ट्रांजिस्टर, बट ट्रांजिस्टर हैज द थ्री टर्मिनल्स बिकॉज हियर आर द थ्री मटेरियल्स आर यूज, तीन मटेरियल्स यूज किए। सो सी हियर इट कंसिस्ट ऑफ अ लेयर ऑफ लो बैंड गैप मटेरियल, जिसका बैंड गैप कम रहता है, इस टाइप का मटेरियल यूज किया। कौन सा? पी टाइप मटेरियल। ये जो पी टाइप मटेरियल कौन सा, इसके अंदर डोपिंग किया है पी टाइप मटेरियल में। कौन सा डोपिंग किया है? गैलियम और आर्सेनिक का डोपिंग करके पी टाइप मटेरियल बनाया है। By doping the gallium and arsenic in the semiconducting pure semiconducting material, we have got the p-type material.
सो ये जो पी टाइप मटेरियल है विच का जिसके अंदर डोपिंग किया गैलियम और आर्सेनिक का, वो मटेरियल सैंडविच किया, बीच में रखा है। जो डार्क शेडो के अंदर दिख रहा है दैट इज दिस मटेरियल, पी टाइप गैलियम आर्सेनिक। आपने इतना नहीं याद रखने का। इस सैंडविच बिटवीन द टू हायर बैंड गैप। इसका बैंड गैप कैसे है? लोअर बैंड गैप है। इसके जो आजू बाजू में मटेरियल से उसका बैंड गैप कैसा है? हाई बैंड गैप मटेरियल है। सो एट वन साइड देर इज द पी टाइप हाई बैंड गैप मटेरियल। कौन सा है? उसके अंदर एल्यूमिनियम का डोपिंग किया, गैलियम का डोपिंग किया, आर्सेनिक का डोपिंग किया टू इंक्रीज द बैंड गैप। ये भी पी टाइप मटेरियल है, बट कौन सा मटेरियल यूज किया उसके अंदर डोपिंग के लिए? एल्यूमिनियम, गैलियम एंड आर्सेनिक। और इसके अंदर ये जो सैंडविच के उसके अंदर सिर्फ गैलियम और आर्सेनिक का डोपिंग किया है। सो दिस इज द बैंड गैप इज वेरी लेस, लो बैंड गैप मटेरियल है, और इसका हाई बैंड गैप मटेरियल है। और नीचे के साइड जो मटेरियल लिया दैट इज द एन टाइप मटेरियल। ये एन टाइप मटेरियल में डोपिंग किया एल्यूमिनियम, गैलियम, आर्सेनिक। एन टाइप मटेरियल के अंदर कौन सा डोपिंग किया? एल्यूमिनियम, गैलियम, आर्सेनिक। इस टाइप का डोपिंग करके ये वाला मटेरियल बना है। So this is the special type of p-type material and this is also special type of p-type material. और जो सैंडविच किया है that is also the special type of p material, low band gap का material। So the arrangement is in this way, that is the p-type material is sandwiched between the another p-type and n-type material. The middle p-type layer of gallium arsenide that act as a active reason। एक्टिव रीजन है ना, जहाँ पे लेजिंग एक्शन होने वाला है वो मिडल मटेरियल के अंदर होने वाला है। दिस इज द मिडल मटेरियल वेयर द लेजिंग एक्शन इज टेक्स प्लेस। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द एक्टिव रीजन। इसलिए उसको क्या बोलेंगे हम? एक्टिव रीजन बोलेंगे। Resonant cavities form by coating the two opposite side surfaces with thin metal films। ये जो अपर सरफेस था यहाँ पे मेटल का कोटिंग किया, थिन मेटल फिल्म का कोटिंग किया, और लोअर सरफेस को भी थिन मेटल फिल्म का कोटिंग किया टू फॉर्म द रेजोनेंट कैविटी। यानी ऑप्टिकल रेजोनेटर्स बनाने के लिए यहाँ पे कोटिंग किया दोनों साइड में। और लाइट भी वहां से एमिट नहीं होगा बिकॉज ऑफ दैट कोटिंग। लाइट कहाँ से एमिट होगा? मिडल मटेरियल से। Ohmic contacts are provided on the top and bottom faces to pass the current through the junction। इसको सप्लाई करने के लिए कनेक्ट द सप्लाई, यहाँ से एक इलेक्ट्रोड लिया और नीचे से एक इलेक्ट्रोड लिया, एंड दिस इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड टू द बैटरी। बैटरी को कनेक्ट किया। upper terminal is connected to the p type positive terminal and the negative terminal is connected to lower side। मीन्स p टाइप को पॉजिटिव कनेक्ट किया और n टाइप को नेगेटिव कनेक्ट किया। यानी कौन से मोड में कनेक्ट किया? फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस में। डायोड इज कनेक्टेड इन फॉरवर्ड बायस मोड। सो दिस इज अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हेटेरोजंक्शन सेमीकंडक्टर लेजर। नाउ हाउ दिस लेजर वर्क्स, ये लेजर किस टाइप से काम करते हैं? जस्ट वन। So here, when the junction is at zero bias, the Fermi level is uniform across the junction। जीरो बायस है ना, कुछ भी सप्लाई नहीं कनेक्ट किया, the supply is zero। सप्लाई कुछ भी कनेक्ट, the supply is connected across the zero supply, यानी both the p type and n type material कुछ भी सप्लाई नहीं कनेक्ट किया तो दैट इज कॉल्ड एज जीरो बायसिंग। इसको क्या बोलते हैं? जीरो बायसिंग। So at zero biasing, the Fermi level in both the region is uniform। What is meant by Fermi level? So there is a definition of Fermi level। आपको concept नया है Fermi level का, फोर्थ यूनिट के अंदर डिटेल्स में आएगा आपको Fermi level क्या होती है। At this moment you should remember only the definition। That is the highest occupied energy level at 0 Kelvin, at temperature 0 Kelvin, it is called as the Fermi level। जैसे एनर्जी लेवल्स रहती है ना, नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स, वैसे एक लेवल को, एनर्जी लेवल को क्या बोलते हैं? फर्मी लेवल। कौन सी एनर्जी लेवल को फर्मी लेवल बोलते हैं? सो द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड एनर्जी लेवल ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन। द हाईएस्ट, सबसे ऊपर की एनर्जी लेवल जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, कब? व्हेन द टेम्परेचर इज 0 केल्विन, दैट एनर्जी लेवल इज कॉल्ड एज द फर्मी लेवल। इन जनरली in n type material the Fermi level lies just below the conduction band, and in p type material the Fermi level lies just above the valence band। valence band के ऊपर लाइज होती है, और n type material के अंदर below the conduction band।
when at the zero biasing यानी सप्लाई जब कनेक्ट नहीं किया, so the Fermi level, ये जो डॉटेड लाइन से बताया ना यहाँ पे, ये जो डॉटेड लाइन बताया, that is the Fermi level. So Fermi level is in straight line, that is uniform. दोनों साइड में उसका एनर्जी लेवल कैसा है, सेम है, that is in straight line. So this is the valence band and this is the conduction band. See here, ये n type, this is n type material, this is the p type material, and this is the middle material, or this is called as the barrier potential, or it is called as the पोटेंशियल बैरियर का जो रीजन रहता है वो वाला रीजन बताया डॉटेड लाइन से या स्ट्रेट लाइन। सो कंडक्शन बैंड के ऊपर जस्ट मैंने आपको अभी बताया कि जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड रहती है फर्मी लेवल, बट यहाँ पे ऊपर लिया अंदर बताया, कंडक्शन बैंड के अंदर बताया। क्यों बताया? बिकॉज हमने यहाँ पे स्पेशल टाइप का मटेरियल यूज किया, और मैंने यहाँ पे बताया कि फॉर द पी टाइप मटेरियल इट इज जस्ट अबव द वैलेंस बैंड, बट यहाँ पे अंदर बताया बिकॉज हमने स्पेशल टाइप का मटेरियल यूज किया। So this is just inside the conduction band here, and this is just inside the valence band here, p-type material. So at zero biasing, the Fermi level is the uniform across the junction. Junction के वहाँ पे कैसा है, Fermi level straight line के अंदर है, uniform. तो energy सब तरफ same है उसका. When we connect the supply, यानी forward biasing जब apply करते हैं, when we connect the supply means forward biasing is apply. So forward biasing में क्या होता है, करंट पास होता है जंक्शन में से। So when we apply the forward biasing, due to the electrons are injected, electrons inject होते हैं ये डिप्लेशन लेयर के रीजन के अंदर। The higher efficiency of electron injection compared to hole injection, होल का इंजेक्शन कम होगा, इलेक्ट्रॉन का इंजेक्शन ज्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन्स आर इंजेक्टेड इन द जंक्शन, जंक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट होते हैं। So concentration of electrons in the middle region reaches to very high value. देखो see, this is the middle region. Middle region में क्या हो रहा है? Once we apply the forward biasing, then what is the first thing? The position of Fermi level get changed. Position जो रहता है Fermi level का change होता है। See here, यहाँ पे था Fermi level straight line, यहाँ पे Fermi level कैसा हो गया, इस टाइप से। Position of Fermi level get changed इस टाइप से। क्यों पोजीशन चेंज होता है फर्मी लेवल का? सो बिकॉज ऑफ द इंजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स आर इंजेक्टेड इन द जंक्शन, जंक्शन में से करंट पास होता है ना, इलेक्ट्रॉन पास होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स पास होने की वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द मिडल रीजन आर इंक्रीजेस, एंड बिकॉज ऑफ द इंजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स द पोजीशन ऑफ फर्मी लेवल गेट चेंजेस, because the Fermi level always lies towards the band which have the higher concentration of the charge carriers. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कैरियर्स ज्यादा है, तो इधर रहेगी फर्मी लेवल एन टाइप में। पी टाइप मटेरियल्स के अंदर होल का डेंसिटी ज्यादा रहता है, नंबर ऑफ होल्स आर मोर, सो दैट्स व्हाई द फर्मी लेवल लाइज इनसाइड द पी टाइप मटेरियल। बाद में बताऊंगा फर्मी लेवल फोर्थ यूनिट के अंदर डिटेल्स के अंदर। सो द पोजीशन ऑफ फर्मी लेवल गेट चेंज। Now the number of electrons in the middle regions in the conduction band are increases, means we can say that the number of holes are increases in the valence band. Valence band के अंदर number of holes increase हुए। The vacancy of electron is called as the holes, यानी ये सब electrons ऊपर चले गए। So number of electrons increases in the middle region of the conduction band. Conduction band के अंदर increase होते हैं in the middle region। और यहाँ पे होल, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुए ना, हम बोलेंगे यहाँ पे वैकेंसी हो गई इलेक्ट्रॉन के, ना होल्स आर इंक्रीजेस, नंबर ऑफ होल्स आर इंक्रीजेस। The middle region now contains large concentration of electron in conduction band and the large concentration of holes in valence band. So we have completed this. Now what happened next? Does the upper energy level in the middle region have the high population density of electrons? Just 1 minute. Hello. सब 5 मिनट लेक्चर चालू है। हेलो, listen me carefully. So यहाँ पे number of electrons ज्यादा है, यानी we can say that the population inversion is takes place. To have the more number of atoms in the higher energy state, it is called as the population inversion. Here instead of atom we are going to use the electrons. Upper energy levels के अंदर electrons ज्यादा है, तो we can say that the population density of electron in conduction band is more. So we can say that the population inversion is takes place. This band is empty. यहाँ पे चार्ज कैरियर एटम की जगह पे क्या कंसीडर कर रहा हूं मैं, इलेक्ट्रॉन। सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम है, होल से है ना, इलेक्ट्रॉन नहीं है। वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज होल।
डिफिशियंसी यानी इलेक्ट्रॉन होना चाहिए थे बट नहीं है, तो ये होल्स है, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है. So in this way, the population inversion is takes place. The lower energy level in the middle region remains vacant. That is, population inversion has been achieved in the middle region. That is the middle region p-type layer of gallium arsenic act as a active region. कहाँ पे population inversion हुआ? Middle region में. Middle region यानी कौन सा? जो sandwich material. So that is called as the active region. When a spontaneously generated proton passes through the middle active region, इसमें से जब spontaneous, देखो ये जो रीजन रहता है ना, इसके अंदर एक ट्रांजिशन होता है, दैट इज द स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन. सो उसके अंदर फोटोन एमिट होता है, जस्ट लाइक द एलईडी जैसा काम करता है. जब कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स का, देन स्टिमुलेटेड एमिशन होती है. सो व्हेन द स्पॉन्टेनियसली एमिटेड फोटोन passes through this region, it forces the spontaneously emitted photon forces the electron in the conduction band to jump into the valence band, and during this transition from conduction band to valence band, the during these transitions they emit the photon emissions hota hai, means we get the radiation, and these transitions are takes place due to the spontaneously generated photons. So that's why these transitions are called as the stimulated emissions. So stimulated emission of photons are takes place. So here we get the light, we satisfy the properties of laser. So यहाँ पे laser light मिलता है. Do you have any problem up to this? No, sir. No, sir. So today we have completed the two types of laser. That is the gas laser. In gases type laser, we studied about the construction of carbon dioxide laser and working of carbon dioxide laser. We also studied about the advantages of carbon dioxide laser. Then we have studied about the semiconductor laser. That is the construction of heterojunction laser as well as the working of heterojunction laser. So I think this is sufficient for today. And next lecture, we are going to study about the applications of laser. That is also the theoretical parts. So in next lecture, we are going to finish the first part of the unit second, that is laser. Laser complete हो जाएगा हमारे next lecture में. Only the applications are remaining. So now I'm going to share the